is CSS, right? Cascading Style Set. So CSS stands for, that is Cascading Style Set. So it saves our lots of work, and it can control the layout of multiple web pages. Right. So if you apply the CSS in body, then it will be automatically applied to all the parent tags, all the child tags. Right. So if you apply the CSS to parent tag, then it automatically apply the that child tag. Right. So basically, this cascading style set is used to give a style. Right. So CSS is used to format the layout of your web page. Right. CSS is nothing but cascading style sheet is used to format the layout of web page. Right. आपका जो भी web page है उसको कुछ format layout format के लिए you can use the CSS. Right. With the CSS you can control the color, then font, the size of the text. The spacing between elements, how elements are positional and layout, what background images or background colors are to be used. Right, so to giving the color, to giving the size of the text, to giving the background color, to giving the background images. Right, so for that we have used the CSS. Right, the word cascading means that a style applied to a parent child will also apply to all the children element. That is the meaning of this cascading, right, within the parent. So if you set the color to the body text, right, for example, blue, all heading paragraphs and other text element within the body will also get the same color, right? So that is the use of your cascading style set, right? So basically it is used to format the layout of your web pages, right? CSS stands for cascading style set, right? So what it saves you a lot of work, because once you create this CSS, it will automatically apply to your web pages, right? The word cascading means if you apply this style to the body tag, means if you apply the style to the parent tag, then it automatically apply to the that child tag, right? That is the meaning of your cascading, right? For example, अगर आपने body tag में color is equal to blue लिखा है, तो इसके अंदर जो भी होगे font color, that will be automatically applied to the blue, right? So that is all regarding CSS. So understood everyone up to here? Cascading style क्यों यूज हो रहा है? टू फॉर्मेट योर लेआउट ऑफ द वेब पेज, फॉर्मेट द लेआउट ऑफ योर वेब पेज, राइट? CSS का फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल सेट, राइट? आप विद द हेल्प ऑफ CSS आप फॉन्ट साइज सेट कर सकते हो, फॉन्ट कलर सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, राइट? बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हो, विड्थ इक्वली दे सकते हो हर एक टेक्स्ट को, height दे सकते हो, right? So that is all with the help of the CSS. The meaning of cascading is nothing but if you apply the parent tag, if you apply some style to the parent tag, then it automatically apply to its child tag, right? So that is the meaning of the cascading, right? So understood up to here everyone? वेब पेज को फॉर्मेटिंग करने के जो भी आपका जो लेआउट है वेब पेज का, उसको फॉर्मेट करने के लिए, राइट? तो फॉर दैट वी हैव यूज्ड द CSS, राइट? कैस्केडिंग स्टाइल सेट. सो अंडरस्टूड अप टू हियर एवरीवन? पता चला सबको? यस सर. So basically 3 types of CSS we are using in our web page. That is
three-way, right? That is, first one is inline, second one is internal, and third one is external. Right. So three CSS we are using that we see one by one. First one is the inline CSS. Right. There are three ways to apply the CSS. There are three ways to apply the CSS. First one is inline. Second one is internal. Third one is the external. Right. Right. आप थ्री वे से CSS अप्लाई कर सकते हैं. Right. So first one is inline CSS. First one is inline CSS. The meaning of inline CSS is if you want to apply some style on particular tag, right? Only for particular tag. For that we have to use inline CSS, right? तो that is apply to that अगर आप text box में apply करते हो, right? तो that is for that text box only, right? That is not applied to everyone. So that is the meaning of inline CSS, right? So for that, which attribute we have used? Style attribute inside the HTML element. For that, we have used style attribute inside the HTML element. Right. So there are three ways to apply the CSS: inline, internal, and external. Right. First one is inline. अगर हमें सपोज टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ स्टाइल अप्लाई करनी है तो फॉर दैट वी हैव यूज स्टाइल टैग ऑन पर्टिकुलर टैग. जो भी टेक्स्ट बॉक्स का टैग होगा वहां पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं इनलाइन में. राइट. फॉर दैट वी हैव यूज स्टाइल टैग. राइट. So first one is inline CSS. So inline CSS is used to apply a unique style to single HTML element. Inline CSS is used to apply a unique style to a single HTML element. So for that, which attribute we are using? Style attribute, right? For example, see, suppose this one is a h1 tag. So how we are applying? In small letter style is equal to color equal to blue, right? पता चल रहा है सबको? So अगर आपके पास लैपटॉप या तो पीसी है तो वो लेके ही बैठिए. राइट. सो दिस वन इज अ टोटली प्रोग्रामेटिकल. राइट. तो पहले अगर आप पैरेलली वर्क करोगे तो यू कैन अंडरस्टूड बेटर. राइट. तो HTML ये सब these are all the basic tag, right? That are already we have seen. Suppose I give this suppose I give name demo.html. મને કઈ દેવાનું શું બોલાવવાનું છે મને ખબર ના હોય ને. Suppose this one is a demo.html, right? I run this. So for that we have to give the extension .html, right?
See this a blue heading, right? Or this paragraph is red. पता चल रहा है सबको? So here this one is called inline CSS. This one is called inline CSS with the help of style attribute, right? CS style is equal to in डबल कोट कलर कॉलन ब्लू. अगर कुछ और लिखना है तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं. सपोज विथ इज दिस वन विथ कॉलन 100 लाइक दिस. पता चला है सबको? Yes, sir. So this one is a style inline CSS, right? So everyone try this. I will give the 2-3 minutes. Everyone try this. In heading you have give address, and in paragraph you can type your address, right? Right. In H1 tag you give address, and in paragraph you can type your address, right? Try this. I will give 3 minutes. So there are 3 types of CSS, 3 ways to apply this CSS: inline, internal, and external. So first one is the inline CSS. For that, that is for particular element only. Right? That is for particular element only. Right. And for that, which attribute we are using? Using style attribute. ओके हो गया सबका? Okay, fine. So next is internal CSS. Right. Next is internal CSS. So this basically this internal CSS is used to define a style for a single HTML page. राइट, सिंगल HTML पेज. अगर आपको एक पेज पे ही वो स्टाइल अप्लाई करनी है तो फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस इंटरनल CSS.
फॉर पर्टिकुलर टैग के लिए मुझे वो अप्लाई करना है, तो एट दैट टाइम यू हैव यूज द इनलाइन सीएसएस, राइट। एक पर्टिकुलर पेज पे ही मुझे अप्लाई करना है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज इंटरनल सीएसएस, राइट। सो इंटरनल सीएसएस इज डिफाइंड इन दी हेड सेक्शन, राइट। आपका जो हेड सेक्शन है उसमें यू कैन अप्लाई द इंटरनल सीएसएस with the help of which tag, style tag, with the help of the style tag. So see this example. So in this head tag we have applied the style tag, right. So see this background body color is this blue, h1 is blue, p1 is red, like that, right. You can set height, width, right. So this one is on particular body tag, this one is ऑन पर्टिकुलर H1, राइट। क्लास पे कैसे अप्लाई करना है, आईडी पे कैसे अप्लाई करना है, दैट विल सी लेटर ऑन, राइट। सो अभी आप क्या समझ लो, व्हाट इज इनलाइन, व्हाट इज इंटरनल एंड व्हाट इज एक्सटर्नल, राइट। आफ्टर दैट वी हैव सी द प्रॉपर एग्जांपल, राइट, के कौन से स्टाइल आती है, कौन सी कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी वे से अप्लाई कर सकते हैं, दैट वी सी लेटर ऑन। अभी आपको व्हाट इज इनलाइन, व्हाट इज इंटरनल एंड व्हाट इज एक्सटर्नल, और वो हाउ वी आर अप्लाइंग ऑन HTML, वो अभी देख लो, राइट। बाद में हम एक पेज पे अप्लाई करके प्रॉपरली विथ वन एग्जांपल देखेंगे, राइट। सो व्हाट इज इनलाइन सीएसएस, अगर if we want to apply on particular tag, only particular tag, that tag at that time we have to use the inline css. Internal css, if you want to apply on particular web page, at that time we have used the internal css, right. So that we have to write inside the which section, head section, that we have to write the inside the head section with the help of which tag, style tag, clear. So that is called internal css, that is called internal css. So I copy this, and I run this. See this background color, पता चला बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, इसका ब्लू हो गया, इसका रेड हो गया, राइट। सी दिस बॉडी पे जो ये कलर दिया था, राइट, पावर ब्लू, तो दैट विल बी अप्लाई ऑन होल द बॉडी, राइट। H1 पे क्या लिखा था, ब्लू, सपोज आई चेंज इट एंड ब्लैक, this tag is now black. So internal CSS कहाँ पे अप्लाई करना है, inside the head section. देखो यहाँ पे हेड सेक्शन में मैंने स्टाइल करके लिखा है, तो जो भी चाहिए मैं स्टाइल करके लिखूंगा विथ इन कर्ली ब्रैकेट, सी दिस टैग एंड आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट, एंड जो भी हमें अप्लाई करना है दैट एंड क्लोज दिस कर्ली ब्रैकेट, दैट इज द सिंटैक्स, राइट। पता चल रहा है सबको? सो ट्राई दिस ऑल्सो, internal CSS, right? We'll give you 5 minutes. We'll give you 5 minutes. Inline CSS, then internal CSS.
Okay, fine. Next is external CSS. Next is external CSS. Okay, basically this external CSS is used to define the style on more than one HTML page. Many HTML page you can say. For at that time you use external CSS. अगर particular tag पे ही apply करना है तो inline CSS, particular page पे ही apply करना है तो internal CSS, और एक से ज़्यादा पेज पे apply करना है तो you can use external CSS, right? So for that you have to add the link tag inside the head section, right? CL link. This one is one attribute, name of the sheet, and अगर particular एक ही folder में होगा this CS this page and this CSS, then you have directly write the name of the style sheet dot CSS. href is equal to name of the style sheet dot CSS, right? तो ये just we are passing the link. जिस जिस पेज पे आपको अप्लाई करना है वो आपको हेड सेक्शन में ए है दैट यू हैव टू राइट इन एवरी पेज ओनली दिस लाइन, राइट? जिस जिस पेज पे हमें अप्लाई करना है वो पेज पे आपको हेड सेक्शन में यू हैव टू राइट दिस लाइन, राइट? राइट, सो again you have to create one CSS file. तो इस तरह से you have to write the name of the tag, or you can say name of the classes, or you can say, use the ID, right? So if you apply to background color, then use the background color, right? H1 color colon blue. Like that you can use the style.css sheet, right? So these two things you have to create. These two things you have to create. One this style sheet and another is web page and another is web page. Right? So there are three ways to use CSS: inline, internal, and external. Right? For external, you have to create one separate sheet that is CSS file. Right? पता चल रहा है सबको? So these two things you have to use inside the same folder. ये दोनों ये जो कोड है वो और this code ये जो you have to create some separate file. Suppose and give the name style.css, right? और यहाँ पे क्या करना है? Remove this thing, and instead of this you have to write the link, this link. मैंने सिर्फ स्टाइल लिखा था, नहीं style.css, right? Save this page.
So can I run this? राइट तो इस तरह से आप कर सकते हो. क्लियर एवरीवन? Apply this. I will give you 5 minutes. एक पेज बनाओ और एक CSS फाइल बनाओ विथ एक्सटेंशन सेम. दोनों नोटपैड पे ही लिखो. एक का .html एक्सटेंशन रखो और एक का .css रखो एंड ट्राई दिस. राइट, विल गिव यू 5 minutes.